So hi friends, welcome to our YouTube channel, and in this video we will see how we can draw such pattern, this patterns and one more patterns, that these patterns. Okay, these two patterns, how we can write a program for this pattern in Java. Okay, so let's get started. Before we get started, please subscribe to our channel. Okay, so if you see such patterns, any type of pattern, you need to see first of all there is how many number of rows. Okay, number of rows, how many number of rows, and then you need to see the how many number of columns. Why we have to see? Because it will show you number of rows is show you the outer loop how many times it will run. Okay, as you know, if you in order to draw such patterns, we need to iterate the loops. Okay, so this will show that outer loop is so that how many times and number of rows, so that how many number of times our outer loop will run, and inner loop is number of columns shows that our inner loop. Okay, so in this you can see the number of columns and number of rows is how many. There is 6 number of rows and 6 number of columns. Okay, and you can see it is not like outer loop is from 0 to 5. Okay, 0 to 5. If we start from 0, so 0 to 5, but columns you can see first it is uh, run for one time, second it is 2, third it is there is column 3, fourth time there is column 4, then 5, then 6. So you can see the pattern is like this. When a row is 0, or we can say row is 1, for row 1 it is star is pattern is also 1, means inner loop how many times it should work for 1. Okay, when row is 2, okay, inner loops should also run for 2. When row number is 3, inner loop should be run for 3. 3 means what? From 1 to 3, right? So our loop is start from what? 0. Okay, so our start from 0. So what I can see for outer loop and inner loop. Okay, so when outer loop values is like 0 to 5, it will run. Okay, so when outer loop values is 0, it should run for 0, means for 1 times. Okay, when it is 1, it should work for 0 1. Okay, when it is 2, then it should work for 0 1 2. When it is 3, it should run for 0 1 2 3. And when it is 4, 0 1 2 3 4. So here we can observe the pattern how we can draw. Okay, so let's get start and write a program. It's very simple. ओके, सो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है हमें? एक तो आउटर लूप के लिए, एक इनर लूप के लिए, और एक नंबर ऑफ रोज कितनी है उसके लिए. ठीक है, तो एक आउटर लूप के लिए हम आई लेते हैं, इनर लूप के लिए जे लेते हैं, एंड कितनी नंबर ऑफ रोज है उसके लिए हम रो एक वेरिएबल लेते हैं. ठीक है, हियर ऑलरेडी हमें पता है कि ये नंबर ऑफ रोज जो है 6 है, बट यदि नहीं पता है तो हम स्कैनर का यूज करके इसकी वैल्यू इंटर करवा सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आउटर लूप स्टार्ट करना है. आउटर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? तो आउटर लूप जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, लेकिन आउटर लूप कहाँ तक चलेगा? आउटर लूप चलेगा टिल दी रो, नॉट एग्जैक्टली टू रो. ओके, मतलब इक्वल रो तक नहीं जाएगा, टिल रो मतलब 0 to 5, नॉट 0 to 6. ओके, because our loop is start from 0, so I is less than row, and I will all time it will increase. Okay, देन इनर लूप के लिए चलते थे. इनर लूप जो है वो भी स्टार्ट तो होगा 0 से, लेकिन चलेगा कहाँ तक? आई की वैल्यू तक. ठीक है, तो j इज लेस देन और इक्वल टू आई. ठीक है, मतलब जब इनर आउटर लूप की वैल्यू 0 हो तो ये 0 चले, जब 1 हो तो 0 and 1 चले, जब 2 हो तो 0 1 2 चले, लाइक दैट. ओके, and j value all time increase, and that means it will start from 0 and increase 1 by 1, 0 1 0 1 2 0 1 2 3, like this. Okay, and इस टाइम जब भी आउटर लूप पे इनर लूप पे आए तो इनर लूप का क्या काम है? स्टार प्रिंट करना. ठीक है, जब भी एक रो, you can see in diagram,
then when a values is 0, when a outer loop is 0, it should print a 0 time stars. ओके, तो यही चीज है कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल में हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। और जब भी इनर लूप का काम खत्म होगा, ठीक है, व्हेन इनर लूप इस वर्क इज डन, देन इन बिफोर द स्टार्ट नेक्स्ट लूप, आउटर लूप, वी नीड टू चेंज द लाइन्स। ओके, तो हमें क्या करना है, इस जैसे ही ये इनर लूप का काम खत्म होगा, यहाँ पर हम न्यू लाइन करवाएंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट print ln means new lines in Java. Okay, so this is done. So let me run it. You can see the patterns. Okay, pattern, तो I think it is very easy. क्या क्या चीजें हैं, ये है इनर लूप को आउटर लूप को शो करते हैं, आउटर लूप, दिस इज इनर लूप। इनर लूप किसके लिए, कॉलम के लिए है, एंड आउटर लूप किसके लिए, रोज के लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए, नंबर ऑफ रोज, एंड दिस विल print the star, our pattern is star, and this is for what, whenever is row is complete, then throw the cursor in the new lines after print each lines, after print each line. Okay, so you can see how we can draw these patterns. Okay, so I think it is simple.